हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8 की साइंस में चैप्टर 1 लाई हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम जो हमारे टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड फिर उसके बाद आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इसमें इंट्रोडक्शन में पूरा ही हमारा क्रॉप्स के बारे में है, ठीक है, और प्रोडक्शन वगैरह के बारे में है। हम ह्यूमंस ही है ना, तो हमें सरवाइव करने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? फर्स्ट लाइन में वो है humans require food for their survival as the energy obtained from the food is used for the various metabolic activities as respiration and excretion etc. मतलब ह्यूमंस को फूड की जरूरत होती है ताकि वो सरवाइव कर सके। कैसे? एनर्जी के, ठीक है, एनर्जी हमें, अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। और वो हमें कहाँ से मिलती है एनर्जी? फूड से। और फूड मतलब और हमें ये फूड की जरूरत होती क्यों है? फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन करने के लिए एंड एक्सक्रीशन करने के लिए। We get our food from plants, the agricultural practices and animals by the process of animal husbandry. हमें फूड मिलता कहाँ से है? प्लांट से। प्लांट्स को कैसे करते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे तभी तो हमें प्लांट से फूड मिलेगा। और एनिमल से, जो हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। In order to provide food for a large population, अगर हमें प्रोवाइड करना है फूड ज्यादा पॉपुलेशन को, तो किस चीज का ध्यान रखना होगा? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड is necessary, ठीक है। When plants of the same kind are grown, अगर सेम काइंड के प्लांट्स ग्रो होते हैं एंड कल्टीवेट होते हैं एक ही जगह पर, लास्ट बड़े मतलब बहुत बड़ी जगह है, लार्ज स्केल है, वहीं पे सेम काइंड के क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, कल्टीवेट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल wheat, rice, cereals, vegetables, fruits. These are classified on the basis of season in which they grow. हम इन सीरियल्स मतलब क्रॉप्स को सीजन के हिसाब से, सीजन के बेसिस पे डिवाइड कर देते, क्लासिफाइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो आगे लिखा है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट मैं फिर भी पढ़ा देती हूँ। India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. It is more important for your chapter in this chapter. Please ऐसी introduction में आएगा normally. अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं? तो दो टाइप्स के क्रॉप आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं इस चैप्टर में, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप कौन से होते हैं? जो कि रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, ठीक है, जैसे कि पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। और ये रेनी सीजन कब होता है? कौन से मंथ में होता है? जून टू सितंबर। एंड राबी क्रॉप्स कौन से मंथ में होते हैं? अक्टूबर टू मार्च, विंटर सीजन में। और फॉर एग्जांपल व्हीट, ग्राम, व्हीट, मस्टर्ड एंड इनलाइन से। अब पैडी को हम राबी क्रॉप्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि राबी जो पैडी जो है वो कल्टीवेट नहीं हो सकता समर्स में, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। Therefore, it is not cultivated. It is cultivated in rainy season, not cultivated in summer season. Okay. चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंक्लूड वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहले
हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में किस चीज़ की जरूरत होती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Preparation of soil is the first step before growing a crop. हमें जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं, है ना? One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. ये लाइन बहुत इजी है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. ठीक है, इस पैराग्राफ को मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना चाहूंगी. अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं आगे कि दीदी हमें ये समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन कर दो. लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगी के बाद. The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmers since they further turn and lose the soil and add humus to it. Only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth. Turning and loosening of soil bring the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. इस लाइन में पूरी तरह यही एक बता रखा है कि टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड फ्लफिंग. दिस इज डन बाय यूजिंग द फ्लफ. फ्लफ आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. द फ्लफ field may have been pieces of soil called crumbs. जो फ्लफ फील्ड होता है किससे बनी होती है? बिग पीसेस से सॉइल के, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रम्स. फील्ड इज लेवल फॉर सोइंग. Agriculture implements fluff. This is being used since ancient times for the tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. It contains a strong triangular iron strip called fluff shear. The main part of the fluff is a long log of wood which is called a fluff staff. जो कि मेन पार्ट होता है फ्लफ का, वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग लॉग होता है वुड का, जिसे हम कहते हैं फ्लफ शाफ्ट. The indigenous wooden fluff is increasingly being replaced by iron fluffs nowadays. Who क्या होता है? It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये एक टूल है जिसे हम यूज करते हैं रिमूविंग weeds के लिए और loosening the soil के लिए. It has a long rod of wood और iron. ये बहुत बड़ी होती है, long wood मतलब आयरन की वुड की होती है और आयरन की बनी होती है. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends. इसमें एक strong, broad and bent plate होती है आयरन की जो कि फिक्स की जाती है उनके एंड्स पर. और वो वर्क कैसे करते हैं? एक ब्लेड की तरह वर्क करते हैं. और इसको मतलब ये चलाता कौन है? मतलब पुल्ड कौन करता है? एनिमल्स पुल्ड करते हैं इसे. ठीक है, कल्टीवेटर क्या होता है? Nowadays, fluffing is done by a tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. बहुत ही आसान है, समझ रहे होंगे आप लोग, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी वहाँ पे. अब sowing क्या होता है? Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. Yield नहीं कहते हैं, yield कहते हैं. ठीक है, अब ये भी बहुत आसान है. मैं एक्चुअली इसलिए नहीं समझा रही इन पैराग्राफ को क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है. अगर आप इतनी इजी लैंग्वेज में समझ पाएंगे ना, क्योंकि आप लोगों को बहुत आसान लैंग्वेज लिखी है इसमें. ठीक है, अगर ये लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी, मतलब कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस लाइन में कि दीदी हमें नहीं समझ आ रहा, प्लीज आप मेरे को कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको प्राइवेटली समझा दूँ.
कि बाकी बच्चों को अगर किसी को समझ आ रहा होगा तो फिर बोलेंगे ना इतना आसान भी नहीं समझ आ रहा किसी को, मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो कमेंट कर दीजिएगा कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो। Traditional tool. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through two or three pipes having sharp ends. ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर वरना में समझाई छोड़ो। Use traditional. इस tool को हम use करते हैं traditionally for sowing seeds. Seeds को sowing करने के उसकी शेप होती है फनल की तरह होती है। सीड्स आर फिल्ड इन, जो सीड्स होती है फिल्ड होती है फनल में और पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। सीड ड्रिल को हम यूज करते हैं सोइंग के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस टूल sows the seeds uniformly at proper distances and depths. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using the seed drill saves time, labor. It is important to maintain the distance to avoid overcrowding of plants to ensure proper nutrients, sufficient sunlight and water. Adding manures and fertilizers. अभी मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर की भी एक पीडीएफ शेयर करूंगी बाद में इन दी नेक्स्ट वीडियो। बट इसके बाद इस चैप्टर को समझाने के बाद क्वेश्चन कैसे बताऊंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर में आते ही आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। Okay. Adding manure and fertilizer, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Continuous growing of crops make the soil poorer in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. Farmers dump plant and animal waste in pits. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. ये लाइन समझ तो आई गई होगी ना? The decomposed matter is used as organic manure. मतलब decomposed matter होता है उसे यूज करते हैं organic manure. Fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrient. Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK की full form होती है nitrogen, phosphorus, potassium. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. मतलब अगर हम fertilizers को ज़्यादा use करेंगे तो क्या हो सकता है? Soil less fertile problem हो सकती है. Okay. Fertilizers have also become a source of water pollution. Fertilizers also become a source of water pollution. Water pollution के बारे में तो सुना ही होगा. बताने की जरूरत नहीं है water pollution क्या होता है. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Advantages of manure. चलो इस पे क्वेश्चन आ सकता है. What are the advantages of manure? ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन. चलिए आपको यहाँ पे what is the advantages of manure? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लीजिएगा.
तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? The organic manure is considered better than fertilizers. It enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. Okay? अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, बताते कौन सा. What is the difference between manure and fertilizers? तो बता सकते हैं क्या डिफरेंस है? मेरे को कमेंट करके बताइएगा. इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी. बहुत आसान डिफरेंस है. पहले आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. देन आई विल तभी आपको बताऊंगी आंसर इसका. और बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता ही दूंगी. एनसीईआरटी में तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में तो मेरे को सेंड कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन कमेंट्स में. ठीक है. जस्ट अ मिनट. हम करते हैं इरिगेशन के बारे में. Irrigation, the supply of water to crops at different intervals is called irrigation. तो हम सप्लाई करते हैं वाटर की क्रॉप्स को different intervals में, उसमें irrigation कहते हैं. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, and season to season. It to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. हमें पानी उन्हें टाइम टू टाइम देना होता है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए. ठीक है. अगर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ होनी चाहिए. Water also protects the crop from both frost and hot air current. Sources of irrigation. The sources of irrigation are wells, tubes, ponds, lakes, rivers, dams, and canals. Traditional subsystem. These methods are cheaper but less efficient. More chain pump, देख लिया, and water. Modern method of irrigation. Modern method of irrigation help us to use water economically. The main method used are as follows: sprinkler system and drip system. अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा. मैं एक्चुअली इंग्लिश में समझाते जाता हूँ क्लासेस को, इसलिए मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ. इंग्लिश मीडियम. Protection from weeds. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space, and life. The best time for the removal of weeds is before they produce flower and seeds. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Like 2,4-D. These are sprayed in these fields to kill the weeds. They do not damage the crops. Weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with the sprayer. मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ. अगर किसी को भी किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, कोरोना वायरस की वजह से भी ऑनलाइन हो रही है, अगर ऑफलाइन हो मैं आपको बता दूँगी. ऑनलाइन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आपको व्हाट्सएप नंबर इस चैप्टर के एंड में बताती हूँ. हार्वेस्टिंग. द cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the green seeds need to be separated from the stalk. This process is called threshing. This is carried out with the help of a machine called combine.
which is in fact a combined harvester and thresher. Farmers with small holding of land do the separation of grains start by winnowing. स्टोरेज क्या होता है हम स्टोरेज बताते हैं आपको स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क स्टोरेज बहुत जरूरी है इम्पोर्टेंट है बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड जो ग्रेन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ड्राइड होने चाहिए सन में ताकि वो रिड्यूस कर सके अपना मॉइस्चर दिस prevents the attack by insect pests bacteria and fungi. Farmers store grains in these jute bags and metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them for pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री एनिमल reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Fish is good for health. बहुत लोग fish खाते हैं ये सबको ही पता होगा. We get cod liver. उससे हमें क्या मिलता है? Cod liver मिलता है. Liver oil मिलता है, ठीक है? From fish which is rich in vitamin D, जो कि rich होता है vitamin D से. अब मैं आपको अपना WhatsApp नंबर बता देती हूँ यहाँ पे. मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी को भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर क्लासेस करनी हो किसी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है कभी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए ठीक है और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट my